opportunities for tourism are plenty there. Ujjain, Mahakal Lok. आप लोग को आश्चर्य होगा, you'll be surprised the footfall there. 1.5 lakh people a day. And I'm not saying it on my own. Reliance, when they were looking at launching 5G, there's actual data there. On the weekends, we're looking at about 2 lakh people coming there. Hospitality, great opportunities. इन सब चीज़ों के अलावा जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारे मुख्यमंत्री, और इसलिए कि शायद he is the man after Narendra Modi ji who's the most experienced leader, first time chief minister. Now that is the differentiator. Everybody who's met him since yesterday and today, you ask them how do they feel about it. Was it forthcoming, or he was more than that? You open his heart and say, भेदभाव का कहाँ सवाल, भारत माँ के हम सब लाल. How beautiful is that? So here he is. There's only one way he knows. That's out, open, warm, sincere, welcoming. He's risen from the ranks, from humble background, but he's a man who's learning the job. That's what substance is in reality in front of you here. Right from there, he's gone to the top and stayed there, fourth time chief minister. Ratified again and again and again. He knows the needs of the state. He knows the requirements of the investor, and he's been working to create the ecosystem, and he has done that. Bimaru Rajya se आज मध्य प्रदेश 19.7 की गति से निरंतर प्रगति की रफ्तार विस्तार कर रहा है. एक बार मैं फिर आप लोगों से अपील करूंगा और यही निवेदन करूंगा that you must come to Madhya Pradesh, see the state, feel it, and become a part of it. Thank you so much. Welcome all of you once again. Thank you very much, sir, for sharing those positive remarks. Should we have a bigger round of applause for our Honourable Minister, please? Thank you. He has just spoken about the endless opportunities, the great investment ideas, and of course, endless potential that is present in Madhya Pradesh. But like they say, a picture is worth 1,000 words, and now we want to showcase what we have in store for each one of you. So I would request all of you to please have a look at the big screen. Into the emeralds of the forests and sapphires of the sky, we belong. Residing with the wild and flowing with the divine, we belong. Today, we gather here to tell the tales of our glory and a magnificent story. We gather here to take you down the lanes, to tell the sagas of change, the world where we belong. I'm the wind beneath the wings of 1,000,000 dreams. I'm the speed that connects pursuits and perseverance with their zigzag stories. I'm the catalyst of accessibility and a multi-fold reach. I am the abode of knowledge, nestling art and inventions. I am the equilibrium between sustainability and progress.
I'm the center of strength, sustenance, and development below. I am the momentum that builds bridges of growth and goals. I am the concentration of different energies blazing together all at once. I am the diversity of spaces designed for the leaders of tomorrow. I am the bounty that satiates the souls and nourishes the minds. And the rigor that escapes the boundaries of time. I am the guardian of health, life's only and ultimate wealth. I am the cradle of design thinking and technology stream. I'm the thread that weaves charm and tradition into colorful delights. I am the union of ideas and innovation in the futuristic dimension. I am the roar. I am the resilience. I am the future. I am the momentum. I am the growth. I am the magnificence. I am the strength. I am the soul of divine. I am the heart of this marvelous country. I am Madhya Pradesh. Get ready to immerse into the throbbing heart of a billion opportunities. Wasn't that wonderful, ladies and gentlemen? Could we have a big round of applause, please? I think that was simply splendid. I hope all of you now have a bit of an idea about the strength that we produce right here at Madhya Pradesh. And of course, that was a beautiful video. And now, to detail upon the potential and opportunities in our state, I would now like to welcome Principal Secretary, Department of Industry Policy and Investment Promotion, Sri Manish Singh Ji. Could we have a big round of applause for him, please, as he's joining us on the podium. Thank you. With the permission of the Chief Minister, I'd like to start the presentation. I'll start with welcoming you all to the future-ready state of Madhya Pradesh. We are here to invite you to invest in Madhya Pradesh and grow your investments in Madhya Pradesh so that we build a Atmanirbhar Madhya Pradesh and Atmanirbhar India. Madhya Pradesh is the growth center of India,
and as has been told to you before, that we have been clocking 10% plus GSDP growth rate in the last decade. It's not 1 year, 2 years, but for the last 10 years plus, we have been clocking more than 10% growth, which is contributing to the national GDP growth. The Madhya Pradesh has a central location which is very well known. We are very close to the markets of consumer markets of UP, Bihar. We're close to the markets of Gujarat and Maharashtra, from where you can source your material, you can send your material to the consumers. We are a large state, and we leverage the largeness of the size through a large number of land banks that I will speak to you about later. We are a very, very rich mineral state. We have major minerals and minor minerals in abundance, which can be a potential investment destination. We are industry ready. We have a network of roads. We are pioneers in the public-private partnership in the road sector, and now we have almost 230,000 kilometers of road network. We are very well connected by rail network as well, because the north-south trunk line and the east-west Mumbai-Kolkata line just cuts across the heart of Madhya Pradesh. We are power surplus. We also are over the last couple of years during the Chief Minister's tenure, we built large irrigation projects. And in all these irrigation projects, we have water earmarked for industry. And as you can see, around 1,000 MCM water is available for any industrial use through these dams. We have a number of institutions which turn out students, train manpower for the industries and businesses that want to come and establish in Madhya Pradesh. We have also been a very, very active participant in the ease of doing business reforms that are going in the country, and we currently are in the achievers category. I have already spoken about this access to huge market. You can see within 6 to 9 hours, you almost cover a large chunk of the population of this country. And although we are a landlocked state, but we have 6 inland container depots which can facilitate exports and imports. We have these corridors and expressways cutting across Madhya Pradesh, apart from the rail network that I spoke about earlier. And we also have a rail network which services the freight corridor from the coal sector or the energy sector of India on the eastern side. We have big land parcels, as I've spoken earlier, but these are some of the upcoming investment regions in Madhya Pradesh, mostly on the western side of the country, western side of the state, Pithampur, Devas, Ujjain. Just look at the size of the land availability. So there in Madhya Pradesh, in due course, we are a achiever state in the ease of doing business reforms. We were the pioneer state in establishing something called a Public Services Guarantees Act in India. And through that, that act, the certain services in government services have been mandated to be delivered in a particular time frame, and if they are not, then the officers face penalty. Nevertheless, we have put 44 services of 8 departments into that. We have a process of deemed approval, and we pride ourselves in saying that we can enable industry to start business in 30 days in Madhya Pradesh. We have an Invest portal which is very well integrated with the National Single Window System, which is integrated with the Industrial Integrated System of DPIIT, Government of India.
and we have been taking pains to remove all the cumbersome and the compliance burdens which hamper growth of industries. The labor dynamics in Madhya Pradesh is very, very conducive to work. We don't have hartals, we don't have mandates lost due to labor problem. Our labor policy is very, very investment and industry friendly. We have also because of the situation in Madhya Pradesh, the labor cost is compared to other states is lower, and we have spoke of the institutions wherein these the trained manpower comes out from these institutions to work in the industries and businesses that are coming up in Madhya Pradesh. These are some of the focus sectors. My minister, when he spoke, he touched upon them. I'll try and be fast with them in the interest of time. But I'd like to touch on the tourism part. We are a state where domestic religious tourism is growing at a phenomenal pace. We will like to pitch that to the hospitality industry and people related to that Madhya Pradesh should be your next destination, because religious tourism is something which is now growing at a very fast pace, especially after the Mahakal Lok work that has been done there. There are works in pipeline for other religious destinations in Madhya Pradesh. Also, we are a big wildlife wildlife tourism state. We are the tiger state, we are the vulture state, we are the leopard state, and now we have the cheetahs also in Madhya Pradesh in the Kuno sanctuary. Agri and food processing is one of our focus areas. Because of the expanse of irrigation in Madhya Pradesh and because of various agroclimatic zones that exist in Madhya Pradesh, we've been trying to focus on this. We have had some successes. If you see the key players there, that shows that Madhya Pradesh has potential and Madhya Pradesh is doing well in food processing. We have further opportunities wherein you are all invited to come and invest. These are different regions and different products spread across regions. Automobile and engineering is something which is come around, has developed around the cluster of Indore, Pithampur, Devas, and we have again the key players there: Eicher, Volvo Eicher, Escort. All these people are already there, and there's more scope for people to come in. We have the related infrastructure of auto track testing or tool rooms to support it. Pharmaceutical. It is during the COVID time, it dawned on us that this is something which is very, very important, and we need to be Atmanirbhar in this. And I say this from the point of view of the country, and India came out as a pharmacy to the world. The paracetamol from India was sought after from everybody across the globe. Madhya Pradesh is also contributing it in its own way through our pharmaceutical industry, and we have the key players, Sun Pharma, Cipla, and many more. We have a medical devices park now in Ujjain. People from this sector are welcome to come and invest there. Textile and garment. This has been a game-changing thing that has happened during the tenure of my Chief Minister, and the textile policy has really struck a good resonance with the industry. We have now almost all the big players from the textile and garment industry in Madhya Pradesh. I have been interacting with people who have come to Madhya Pradesh. They've had very good experience. I'll request you to meet some of those people here
and get a first-hand feedback from your side, and then plan for Madhya Pradesh investments. Aerospace and defense, Madhya Pradesh has had two ordnance factories in Itarsi and Jabalpur, and industries related to, or ancillary industries related to these things have grown there. We want to leverage on that and develop a aerospace and defense manufacturing base in Madhya Pradesh. Just to share with you that Madhya Pradesh has the first small arm manufacturing unit in the private sector, which is now owned by the Adanis in Malanpur, Malanpur, Gwalior. The industrial promotion policy of Madhya Pradesh is very, very investor friendly. The various sectors are addressed separately. The key features, in the interest of time, I'll be short because everything is there in the kit that has been provided to you. And if you have any doubts on anything, please feel free to come to us, and we will guide you. Accessibility to officers, accessibility to the decision makers in Madhya Pradesh is not a problem at all. These are the key highlights. The details are there in the kit. I'll try and be short on this. For textile, pharma and food processing, we have special support. Similarly, for apparel and garment, I said that we've been able to attract a lot of industry from different parts of the country, which speaks for the policy itself. Logistics and warehousing. Madhya Pradesh is very, very strategically located for logistics and warehousing, especially after GST. We have good land bank, we have good connectivity. So apart from that, our policy is also supportive. We are trying to improve on that policy, and you'll soon have a better policy or a better ecosystem for logistic and warehousing development in Madhya Pradesh. Ethanol and biofuel is something which we have gone very fast, and now we have a number of units in this area. This is a green energy sector which is much talked about in the current context of things, and we are happy to promote this. The flagship event of global investors is scheduled on 11th and 12th January in the cleanest city in India, in the cleanest state of Madhya Pradesh, and we'd like you to come there. You are welcome. Before that, we are open to having discussions or taking up projects with you so that we are able to close them by these dates. Once again, I invite you all to this Global Investor Summit and also to Madhya Pradesh to come and invest and grow your business in Madhya Pradesh. And I'll again say that come, let's make Madhya Pradesh Atmanirbhar, let's make India Atmanirbhar, and let's have a win-win situation where your investment grows and our state grows. Thank you so much. Thank you, sir, for all of those key insights and making us understand about the support and assurance by the government of Madhya Pradesh. Could we have a bigger round of applause, please? No, we had our sir actually tell us about all of the people who already have their businesses that are flourishing, and of course who are also looking to expand the opportunities in the state of Madhya Pradesh. And now let us listen to their experience. First, I would like to invite Mr. R. Rajkumar, Managing Director, Best Corporation Private Limited. Sir, if I could request you to please share your experience. Could we have a big round of applause, please?
Honorable Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ji, Minister Rajwardhan Singh ji, Minister O.P. Shaklacha ji, dignitaries on the diet, ladies and gentlemen. I am Raj Kumar, Managing Director of Best Corporation. We are based in Tirupur. We are a integrated textile company right from spinning to garmenting, and we employ about 10,000 workers in the region. So when we decided we have to grow, already our factory has more than about 60% of workforce from other states, from north of Madhya Pradesh and Odisha and Jharkhand. So we decided to go where people are. So when we started exploring the opportunities available outside, we visited many states and zeroed in on Madhya Pradesh. So the main thing what has appealed to us or what has been attractive to us, I would like to highlight here. So generally, I think in the last 15 years, Honorable CM has laid a very solid base in terms of land availability, in terms of road network, in terms of power, and the policy guidelines. I mean, all this a solid base has been created. Now, according to my assessment, the next decade in India belongs to Madhya Pradesh. So next decade is going to be having explosive growth from the state of Madhya Pradesh. I'm saying this coming from a progressive state of Tamil Nadu. I'm in Tamil Nadu and our state, as you all know, it's a very progressive state. But having seen what's happening in Madhya Pradesh, I can very well feel convinced that the next decade is going to belong to Madhya Pradesh in India. And about our experience, we are setting up a plant in Ujjain with about 80 crore investment, and the cooperation and the policy guidelines, and from the time it all started when Honorable CM visited Tirupur to look around how Tirupur is successful and how can that be replicated in Madhya Pradesh. So we were invited and I was there. So from the time we went there, the type of land what we wanted, we were shown, and we were very happy with the land what we have selected now. And then we wanted for a special policy, because the general policy was about bigger industries where the limit was based on investment, whereas we wanted, being a garment thing, we wanted based on number of people employed. So immediately that changes were made to the policy. And for garment, for apparel industry, basically the investment is about 25 crores, but whereas still you can get a CCIP, you can go to the cabinet committee and get a special package, which was done at a lightning speed. So that change was done, and everybody from the local DM to the local MLA, everybody genuinely is interested in bringing the industry to the state. So we have been very happy with things so far what has happened, and we are inaugurating the factory in January 23. And already with the experience we have had so far, we are already committing to about 500 crore of investment. We are creating a vertical setup from spinning to garmenting that is in the process. So far everything has been very, very happy, and everybody is genuinely interested in bringing the industry to the state. Thank you. Thank you, Mr. Rajkumar, for sharing your experience, and of course we all agree with one line that you said, that the next decade belongs to the future ready state. So ladies and gentlemen, a big round of applause once again for him, please. And next I would like to invite Mr. Gary Batman, a Managing Director for LAP Group, to please share his experience. And could we have a round of applause as we have Mr. Batman joining us on stage. Honourable Chief Minister, Honourable Ministers, guests, ladies and gentlemen, it's a privilege for me to be invited today to speak briefly about our history of successful investment in the Madhya Pradesh state. LAP India is a manufacturer of electrical and electrotechnical components, and we have had a successful relationship of more than 10 years with investment in Madhya Pradesh state. And we started in 2010 with the acquisition of a piece of land. Initially,
the land was only available on a 30-year leasehold, and based on our investment plans, our shareholders were concerned that this time frame was too short. After successful discussions with the various departments and officials, and closely following the laws and the regulations available, we were pleased to have been able to receive this land on a 99-year period. And we actually became the first foreign company to be able to secure land in Madhya Pradesh on this kind of period. And that really is just testament to the amount of effort and the support that the officials and the state has given us and gives investors in the state. For us, the key message that I can carry over is that the state and the investment department really live up to the commitments that they make. The investment incentives that are offered are there on time without any difficulty in being able to secure them. We have received significant support from various departments in terms of the application for the reimbursement of these incentives, and even during the period when the new GST regime was put in place, and this brought about significant changes to the investment plans, the support we received from MIDP, from the state, to actually resolve these issues was significant and immense. I think for us as an investor, the key takeaways have been that the state is really investor friendly. All the investment programs are investor friendly. Administration is simplified as far as possible to make this investor environment so as friendly as it is. Access to the required officials is easy to get. So there's no difficulty in terms of getting access to officials to promote investment and to promote our particular investment in the state. And the other key takeaway is that the state really lives up to its commitment of being a corruption-free state and making an ease of investment possible. Since our opening of our facility in 2012, we have had two further expansions during the period before COVID. Successful expansions and successful relationship with the state and the officials. We are today in progress with our third expansion, and just last week our board approved a further fourth expansion at our facility in Bhopal. And this really just sums up the confidence our shareholders and our board of directors has in this investment-friendly state of Madhya Pradesh. So from our side, I would like to thank the state of Madhya Pradesh, the government of Madhya Pradesh, the MIDP, for their support over the past 12 years in our journey in Madhya Pradesh. And we as a company look forward to many more years of cooperation and investment in this great state. And I thank you for that. Thank you, Mr. Batman, for giving us, sharing your experience, and of course also giving us the key insights on Madhya Pradesh being a hassle-free investment zone and how easy it is in terms of business opportunities. And all of this, ladies and gentlemen, is possible because of our main person who's right now on stage. So it is indeed my honor and privilege now to invite our very own Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, who has led the growth story of Madhya Pradesh. So ladies and gentlemen, with a thunderous applause, I would like to welcome Shri Shivraj Singh Chauhan ji to please address the gathering. A bigger round of applause, ladies and gentlemen, for our Honorable Chief Minister. हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर भाई राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, आईटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एमएसएमई मिनिस्टर श्री ओपी सखलेचा जी, विजय कृष्णन जी, मेरी टीम आपके सामने बैठी है, पीएस इंडस्ट्री, पीएस आईटी, यहाँ उपस्थित इन्वेस्टर बहनों और भाइयों,
आप सबका मैं केवल मेरी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश कभी बीमारू स्टेट कहलाता था, बीमारू राज्य। सड़कें, भरपूर बिजली, पानी कभी सपना हुआ करती थी। हमारे मन में एक तरफ थी कि हम बीमारू क्यों हैं, इसलिए एक रोड मैप बना के मध्य प्रदेश की विकास यात्रा प्रारंभ की हमने। पहले बुनियादी जरूरतें हमें पूरी करनी थी, क्योंकि सड़कों के नाम पे कई बार मध्य प्रदेश का मजाक उस जमाने में होता था कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है, कुछ पता ही नहीं चलता। आज मुझे कहती हुई खुशी है 3 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई। 3 लाख किलोमीटर हमारी रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। जैसा आप जानते हैं सेंट्रली लोकेटेड है, आप कहीं चले जाए, मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अलग अलग दिशा में 4 लेन 6 लेन, इवन मध्य प्रदेश के गांव को भी पूरी कनेक्टिविटी हमने दे दी है। अब गांव में सड़कें नहीं बना रहे, अब गांव में हमें मांग करते हैं कि खेत में सड़क बना दो, तो हमने खेतों की सड़क योजना भी बना दी। शानदार कनेक्टिविटी। अभी हम 2-3 चीजें और कर रहे हैं। एक, हम अमरकंटक से लेकर जहां से नर्मदा निकलती है, गुजरात की सीमा तक जाती है, तो नर्मदा एक्सप्रेस वे। ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा, इसकी दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर चिन्हित करके उसको मध्य प्रदेश के ग्रोथ का इंजन हम बनाएंगे। चंबल के बिहड़ों के बारे में आपने कभी सुना होगा कि हमेशा मुंबई वाले फिल्में बनाते रहते थे, अलग अलग पुतली बाई से लेके मान सिंह, मलखान सिंह, पान सिंह। जब हम सरकार में आए तो हमने कह दिया कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहते। और आज मुझे बताती हुई खुशी है, ये हमने पहले ही कर दिया। हाँ, आज मैं नहीं कर रहा, या तो गिरफ्तार हुए या ऊपर चले गए। अब चंबल के जो बीहड़ है, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की योजना हम बना रहे हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी तो अटल जी के नाम पे अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। अटल जी का ग्वालियर और मध्य प्रदेश से गहरा नाता था। मुरैना, भिंड, श्योपुर, इनको जोड़ते हुए एक तरफ राजस्थान को हम कनेक्ट करेंगे और पूरा अटल एक्सप्रेस वे। ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि दिल्ली से अगर आपको वहां पहुंचना है तो 2.5-3 घंटे लगेंगे बस बाय रोड। सड़कें शानदार है, और दिल्ली में जो स्थिति है, नोएडा, गुड़गांव में, आप जानते हैं कि लोग अब वहां से निकल के दूसरी जगह जाना चाहते हैं। यहां भी हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है। हम टाउनशिप भी विकसित करना चाहते हैं, हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनाना चाहते हैं। तो अब रोड का मतलब ये नहीं है कनेक्टिविटी का कि हम केवल सड़कें बनाएं। इन्वेस्टमेंट के लिए कहां कहां हम और कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इंदौर के पास हमारा प्रस्तावित है, काफी तेजी से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसके आसपास भी नई टाउनशिप, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, वो हमारे दिमाग में है। फिर परिवहन के लिए मेट्रो, लाइट मेट्रो, वो एक विषय है, लेकिन आसमान का उपयोग क्यों नहीं करें। और जब अभी महाकाल महालोक की आप बात कर रहे थे, तो स्टेशन उतरेंगे तो केवल कार में बैठ कर वहां जाएंगे, सड़क के माध्यम से नहीं जाएंगे, क्योंकि रोज 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, तो सड़कें तो भर गई हमारी। तो हमने कहा आकाश मार्ग का भी उपयोग करो, रोप वे, केबल कार।
जितनी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके व्यवस्थाएं बनाए। हमने मध्य प्रदेश में एक जमाना था, मैं आपको घटना सुनाता हूं। शरद पवार जी कृषि मंत्री भी थे और फूड भी उन्हीं के पास था। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि हमें राशन चाहिए गरीबों को देने के लिए, तो हमारा कोटा बढ़ा दो। उनने मुझे उत्तर दिया कि प्रोक्योरमेंट तो होता नहीं है, लाते तो पंजाब और हरियाणा से आ जाते हो कि कोटा बढ़ा दो, कहां से ले आओ। उस दिन मैं ठान के आया था कि मध्य प्रदेश देश के अन्न के भंडार भरेगा, हम कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज मुझे बताते हुए गए, इरिगेशन पर हमने तेजी से काम किया और मध्य प्रदेश में एरिगेटेड लैंड थी 2003-04 तक केवल 7.5 लाख हेक्टर। ये राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिला के बनाई। आज मध्य प्रदेश में 45 लाख हेक्टर एरिगेटेड लैंड है और 55 लाख हेक्टर तक ले जा रहे हैं। और कैनाल इरिगेशन नहीं, ट्रेस साइज पाइप इरिगेशन, ड्रिप, स्प्रिंकलर का उपयोग करके कम पानी में ज्यादा सिंचाई। और वहां भी उद्योगों के लिए हमने आपको बताया 1000 MCM हमने सुरक्षित रखा है। हमने भरपूर पानी की व्यवस्था की और बाद में एक दिन फिर हम खड़े हुए, प्रणब दादी उस समय हुआ करते थे, और हमने कहा कि अन्न का भंडार भरे, गेहूं समानीरा। मैंने कहा शरद पवार जी रखने के लिए हमको बैग्स, बोरा जिसको कहते हैं, वो तो दे दो। उसकी पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पाई। गेहूं के उत्पादन में पंजाब को लीड कर रहा है और गेहूं भी मध्य प्रदेश का सरबती गेहूं। रोटी जितनी भी कंपनी आती है वो सरबती है कि नहीं है, लेकिन यही कहती है कि MP वीक सरबती गेहूं की बात करते हैं। हमारा बासमती राइस अमेरिका और कनाडा में धूम मचा रहा है। हमारी पल्सेस, दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमने आज अन्न के भंडार भरे मध्य प्रदेश में। और इसलिए फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही थी, अब हम वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तेजी से। उसकी हमारी पॉलिसी है, नीति है, मैं उस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा, समय की भी सीमा है। फिर हमने बिजली, पहले लोग कहते थे आती कम है जाती ज्यादा है, बिजली नहीं आते, बिजली के बिल ही आते हैं। लेकिन 24/7 पावर सरप्लस स्टेट है आज मध्य प्रदेश, और दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश के सोलर पावर प्लांट से बिजली ले जाएगा। तो जितनी बुनियादी चीजें थी हमने दिन रात काम किया, पानी, बिजली, सड़क, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन। और फिर हमारे दिमाग में आया कि अभी तो तब से उद्योगों में हम काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन तेजी से कैसे मध्य प्रदेश का औद्योगिकरण करें। मुझे बताते हुए गर्व है कि इस साल भी मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ है, विकास दर है, ग्रोथ रेट करंट प्राइस पे 19.76% है। हम तेजी से आगे। अगर GSDP देखेंगे मध्य प्रदेश की तो कभी 3.5 लाख करोड़ की थी, अब 11.5 लाख करोड़ क्रॉस कर रहे हैं। देश की GSDP में हमारा जो योगदान था 3.6% था, 4.6% हो गया। लेकिन इतने से संतोष नहीं है, अभी बहुत काम करना है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 बिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है 2026 तक, अब उसमें राज्यों के योगदान तो चाहिए। इसलिए हम तुरंत बैठे आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जितने रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, सबका प्लान हमने तय करके हमने तय किया 550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश बनेगा। और उसमें हर एक सेक्टर का योगदान है। और इसलिए अब हमारा जो फोकस है पूरी ताकत के साथ, वह इन्वेस्टमेंट कैसे आए।
अलग अलग सेक्टर आपके सामने आए। मैं एक एक की पॉलिसी पे आपके साथ डिस्कस यहां से नहीं करूंगा, लेकिन आप देखिए फूड प्रोसेसिंग की बात की, फार्मा सेक्टर की बात हो रही थी। कोविड के दौर में मध्य प्रदेश ने दुनिया भर को दवाई की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत रिच है हमारा फार्मा सेक्टर, निवेश की अपार संभावना है, आईटी के बिना काम चल नहीं सकता। टीसीएस, इन्फोसिस मध्य प्रदेश में आ गई, कई नई कंपनियां और खड़ी हो गई। हम आईटी के सेक्टर में तेजी से काम करें। टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट्स में अभी आप यहां सुन रहे थे, राजकुमार जी बाकी मित्र भी बता रहे थे, मध्य प्रदेश आज पहली पसंद है। हमारा माइनिंग का सेक्टर अगर देखें तो मध्य प्रदेश में सारी चीजें होंगी। लाइमस्टोन हमारे पास है, कोयला हमारे पास है, मैग्नीज हमारे पास है, कॉपर हमारे पास है, लो ग्रेड का आयरन ओर भी हमारे पास है। टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि उसका भी डेरिवेशन किया जा सकता है। डायमंड हमारे पास है, हीरा। आपने अखबारों में पढ़ा हो, बीच में ये हो गया था कि नदी के किनारे नदी पर डैम बन रहा था, तो खुदाई हो रही थी, तो वहां हीरे निकल आए, तो हजारों लोग हीरे की तलाश में निकल पड़े थे। अब हम ये बैन है, जायज है। कोई हीरा खोज के लाएगा तो उसको हम लोग पुरस्कृत करते हैं, इंसेंटिव देते हैं कितना तुम्हारा। तो डायमंड भी मध्य प्रदेश में होता है। मिनरल की दृष्टि से बहुत रिच है मध्य प्रदेश, और फिर सेंट्रली लोकेटेड है, तो आप सब जानते हैं लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग, उसके लिए तो आइडियल है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी चले जाओ। अब शायद मेरे मित्र बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आसपास सब लगे। हम 60% से ज्यादा अपने देश के 60% से ज्यादा हिस्से को आराम से आप यहां मध्य प्रदेश में बनाएंगे, आराम से देख सकते हैं। और हर एक सेक्टर की हमारी अपनी प्रोग्रेसिव पॉलिसी, नीतियां, इन्वेस्टर फ्रेंडली है। इसलिए आप सबको हमने पेन ड्राइव दिए होंगे हर एक पॉलिसी के, क्योंकि हर एक के विश्लेषण में समय लगेगा। और पॉलिसी के अलावा भी हम विचार करते हैं। अगर कोई अच्छा प्रपोजल आता है तो कस्टमाइज पैकेज देते हैं, हमारी सीसीआई विचार करती है, और बाकी सुविधाएं मैं कहता हूं कि कोई ब्रह्मा जी ने नीति बना के नहीं दे दी। अगर हमको लगता है कि विन विन सिचुएशन है मध्य प्रदेश के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी, तो कोई चीज रिलैक्स करना है तो करो। क्योंकि हमको जो टारगेट है वो पूरा करना और जॉब्स क्रिएट करना। खेती की एक सीमा है, और जब मैं यहां आया हूं इस तड़प के साथ आया हूं, केवल एक कर्मकांड करने नहीं आए कि चलो, कई बार रहता है ना कि चीफ मिनिस्टर हो, तुमने इन्वेस्टर समिट करी कि नहीं करी, तो वो भी आजकल एक फैशन हो गया, काम हो गया कि स्टेट का करते रहना चाहिए। लेकिन हम एक जिद, जुनून और जज्बा लेके आपके बीच आए, आपको दिल से निमंत्रित कर दिया। देश बदलना है, मध्य प्रदेश बदलना है, और आज की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी कभी मिलेंगी क्या? लोगों को कोई विश्वसनीय देश चाहिए, और उस दृष्टि से अगर कोई आज नाम लेता है तो केवल भारत का लेता है। नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए जो कदम उठाए हैं, इसलिए दुनिया आज हमें देख रही है। इन परिस्थितियों का हम फायदा उठाएं, केवल अपने लिए नहीं, अपने प्रदेश के लिए भी, अपने देश के लिए भी, इवन दुनिया के लिए भी। भारत तो वो देश है जिसने आज भी हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परा व्यक्ति गणना लौकी सामुदाय चेता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते, वो तो कहते सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हमारे देश का सोचना है। एकम सद्वत् विप्रा बहुधा वदन्ति, जियो और जीने दो, आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः।
उससे आगे भी बढ़ के कहो तो प्राणियों में सद्भावना हो तो विश्व का कल्याण। और इसलिए मित्रों इस अवसर का लाभ था और इसलिए मैं निमंत्रित करने आया हूं। क्यों मध्य प्रदेश आपको बताया गया है, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट आउट करता हूं। इन्वेस्टमेंट के लिए जो चीजें चाहिए वो मध्य प्रदेश के पास है। आपको जमीन चाहिए, जमीन हमारे पास तो लैंड बैंक है। 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक हमारे मैप पे यहाँ पे है। आप भी रखेंगे, मैं आज ऐलान कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें किसी से एक्वायर करने नहीं जाना, किसी के पास लेने नहीं जाना, सीधे सीधे हम आपको दे सकते हैं। आपको पानी चाहिए, पानी हमारे पास है। नर्मदा जी और बाकी नदियों के इतने बांध बना दिए और उद्योगों के लिए पानी रिजर्व कर दिया। आपको पावर चाहिए, 24/7 पावर हमारे पास है। स्किल्ड मैन पावर हमारे पास और वो और तैयार कर रहे हैं। और आप बताओगे ऐसी चाहिए, हम वैसी तैयार करके आपको दे देंगे। ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है भोपाल में। मैं 1 साल में 10,000 बच्चों को हम ट्रेन करेंगे। सिंगापुर के सहयोग से बना है। हमारी ITI को उन्नत किया है, अपग्रेड किया है। और फिर इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम तय कर सकते हैं। आपको जैसी चाहिए आप बताइए, मिलकर तय कर लेंगे, ट्रेन करेंगे और आपको दे देंगे। फिर शांति का टापू है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 24/7 3 शिफ्ट में हमारी बेटियां भी काम करती है बिना किसी डर के। 3 शिफ्ट काम कर रही हैं। 8 घंटे की 3 शिफ्ट बनाओ, 24 घंटे मशीनें चलाओ। आने में जाने में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। कानून और व्यवस्था मजबूत है। मैंडेज लॉस नहीं है। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। प्रेम से होता है जो कुछ होता है। लेबर लॉज में सुधार हमने किए हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने किए हैं। हम अपने लेबर्स का भी ध्यान रखते हैं, इन्वेस्टर का भी ध्यान रखते हैं। और फिर हमारी पॉलिसी इन्वेस्टर फ्रेंडली, मैंने पहले ही बताया। फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी है। अब ऐसे मनी साहब को बता रहे थे कि हमने तो एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट भी बनाया है और उसमें यह तय कर दिया है कि निर्धारित समय की सीमा में अगर कोई अफसर सेवा नहीं देगा तो उस पर जुर्माना लगेगा और वो जुर्माना वसूल करके जिसका काम देर से होगा हर्जाने के रूप में उसको दे दिया जाएगा। सर मध्य प्रदेश की अभिनव पहल की थी। और इसके अलावा मैं हूं मध्य प्रदेश में। मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, इसलिए तो मैं आया हूं। केवल CM नहीं, CEO। अब मिलकर काम करना तो करना है, बस विन-विन सिचुएशन रहनी चाहिए। प्रदेश को कुछ मिले, प्रदेश की जनता को मिले और इन्वेस्टर भी आएगा। तो मैं खुल के कहता हूं कि इसलिए तो नहीं आएगा कि उसको कमाई नहीं करनी, वो भी 4 पैसे बचा नहीं आएगा ना। तो हम देश के हित में भी काम करेंगे, इंडस्ट्री के हित में भी हो, प्रदेश की जनता के हित में भी हो, और जब मिलकर काम करें। अलग अलग पॉलिसी जहां जरूरत पड़ती है हम बनाते रहते हैं। पॉलिसी में सुधार करना, जैसे धान के भंडारण में हमारे पास पैडी है, तो राइस मिलिंग की अपनी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। इथेनॉल की हमारी पॉलिसी चर्चा हुई है, मैं बहुत डिटेल में नहीं था। अगर हमारा बैठ के कहीं और जरूरत है तो हम अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। स्थिति वो रहती है कि प्रदेश की जनता को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो, तो हम एक बहुत अच्छे पार्टनर हो सकते हैं। और जो हमारे यहाँ गए हैं मध्य प्रदेश में, अब कई बार जब एक्सपीरियंस शेयर करने आते हैं तो हो सकते हैं मैं यहाँ बैठा हूं तो थोड़ा ज्यादा बता दे, लेकिन आप अकेले में भी पूछिए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश आप आएंगे तो निराश नहीं होंगे। इसलिए मैं आज आपको इनवाइट करने आया हूं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारी 11 एंड 12 जनवरी को इंदौर में। अब अभी आपको बताया कि क्लीनेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश और क्लीनेस्ट शहर है इंदौर। छक्का मारा है, 6वीं बार। भोपाल क्लीनेस्ट कैपिटल है देश की, राज्य की। तो ऐसे इंदौर में
आप सबका है, देखिए कितने इवेंट हो रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन हमारा 8 को 10 को होगा जनवरी में, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति जी समापन करेंगे। 11-12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके बाद फिर हमारा 28 जनवरी से शुरू हो जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो भी मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं। फिर G20 के जो सम्मेलन भारत को मिली है, तो G20 के इवेंट भी हमारे यहाँ आइए, आप सबका स्वागत। और ये मत समझना कि केवल इन्वेस्टमेंट करने, निवेश के लिए बुला रहा हूं, हम इतने स्वार्थी भी नहीं है। अगर निवेश करना हो तो निवेश के लिए आइए, और नहीं करना हो तो मध्य प्रदेश घूमने ही आइए। आपका दिल से स्वागत। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आपको स्वागत करता हूं। महाकाल महालोक तो देखनी चाहिए, वहां कुछ भी लौकिक नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। और फिर हमारे मित्र बता रहे थे कि टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, बल्चर स्टेट और चीता स्टेट भी, और टाइगर स्टेट भी ऐसा कि कई बार हैंडसेक करने की नौबत आ जाती है सामने। इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर दिल से बाहर मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम सब साथ मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपके प्रेरणादायक शब्दों से हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, could we have a big round of applause please once again for our Honorable Chief Minister. Sir, your unwavering support to everyone is what will make our state future ready. And now I would like to invite our Vice Chairman CII Karnataka, Shri Krishnan Venkatesan, to propose the vote of thanks. A very good afternoon to one and all. It's indeed a great pleasure to be amongst this august gathering, and I feel honored to share the dais with our esteemed guests, Shri Shivraj Singh Chauhan, Honorable Chief Minister for the state of Madhya Pradesh, Minister, MSME Government of Madhya Pradesh, Shri Rajvardhan Singh Ji, Honorable Minister for Industries, Government of Madhya Pradesh, Mr. Manish Singh IAS, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh. At the very outset, I would like to thank the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh for an exhilarating, inspiring and a very passionate address. Sir, very impressive in terms of how you address the audience and the warm welcome what you made to all the industry captains. It's something which is hard to follow. So thank you for a fantastic speech and a great welcome to everybody to invest in Karnataka. So I took a lot of notes from your speech. So let me try and do some justice to the extent of how you looked at in terms of the vision for the state. Like anybody says, the starting point is the infrastructure. I think rightfully so, the Chief Minister really covered about, first is connectivity to the neighboring states in terms of roads. I think that's the principal point, how one investor has taken a great detail, then followed by the water availability in terms of how you can support the industrial development. That's again a pretty big infrastructure point for any state for development, and thank you, sir, for highlighting that. And there was a lot of detail covered during in terms of type of industries which are available, the infrastructure available, starting with the agro industry, a very large play in the state. We talked about textile, we talked about defense, aerospace, and also the more so the IR situation, industrial relations situation, what you spoke about. But to sum it all, I would say the big thing about any state or city today in the world to attract investment is sustainability and being green or clean, right? And that's what any investor is looking at today. And it was made by everyone, just not by you, sir, but I think your entire team highlighted Indore being the cleanest city and Madhya Pradesh being the cleanest state. So thank you for that highlight. It goes a long way to attract investors, so thanks a lot. And again, a very, very passionate leadership what you are showing, and thank you for displaying that in front of our industry captains in Karnataka. Thank you for that. Now I would like also to thank Honorable Industries Minister for his valuable time and interaction with the industries in Karnataka.
You did articulate the advantages of a strategic location, being centrally located, connectivity to so many states around the Madhya Pradesh, and also the situation in terms of land bank, availability of labor, in terms of ease of doing business. So thank you for highlighting the advantages for the investors to come into the state of Madhya Pradesh. So thank you for that. I would also like to extend a heartfelt thanks to Mr. Manish Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, for an exceptional presentation, what you covered now, to elaborate in terms of some of the advantages for our investors to look at investing into your state. I think it was very clear. You articulated very clearly the industries, what is the strength, what you can look at investments, the policies which will support the investments, the ease of doing business. I think the policy, infrastructure, and the focus on industry is really articulated well. Thank you for spending the time to share your thoughts. Extremely well done. A special thanks to the friends from press and media for your presence today. Your presence has added immense value to these deliberations. Finally, I would like to convey my sincere gratitude to all the distinguished industry members present here today and braving the traffic. I can see a full house, so thank you for making sure your presence to this very important deliberation and dialogue. And on behalf of CII Karnataka and on my personal behalf, I would like to assure full support for the upcoming Global Investors Summit, and we look forward to further interactions with the state of Madhya Pradesh and the government and the dignitaries and the delegation out here. Thank you, sir. We are looking forward to visit India during the Global Investor Meet. Thank you. Thank you very much. Once again, ladies and gentlemen, we would like to thank each and every one of you for being with us today and welcome you all to participate to make Brand India global. Join us for Invest Madhya Pradesh Global Investor Summit on 11th and 12th of January 2023. Have a great day, everyone. Thank you and